given to you by Dr. Sachin sir about the implants. What is a basic implant? Conventional. He started from the conventional and he moves slowly towards the cortical. That's how we'll do that. So before I move further, anyone who know about the S665? Chicken 65, yeah. So you have heard about all in 4. You've heard about all in 6. What are these? These are the techniques which explain us how to place conventional implants in a bone. No matter what company you are using, what implant you are using, that's a separate part. It's a technique to explain you that how you have to place an implant in a bone. What technique you have to place? You have to place a 4 implant or a 6 implant at what location? Explain. That is for your conventional implantology. Now here we are talking about the cortical implantology. How many of you know about the cortical implants? Please raise your hand. It's an interactive section. Please try to be interactive. How many of you know about the cortical implants? No one? I was literally amazed when sir said that the final year or I think intern are placing implants in the patients. I was literally amazed. It's really good practice because our routine practice or I would say the clinical practice, implantology is a must nowadays. बिना implants के आप clinical practice नहीं कर सकते. If you are learning implants at final year or internship, it's awesome. But when you are learning this conventional implants, when you are already doing conventional implants, already the courses of the conventional implants are running over here, why we are conducting a course of the cortical implant over here? Anyone can raise your hand for this. Why we are conducting a cortical implant course over here or the workshop over here? Why? Anyone, any idea? You want to learn cortical? Why you want to learn the cortical? That's our question. I'm placing implants since 2009. I placed lots of conventional implants. Then I learned cortical implants. There might be some reason on why I learned this. Anyone, please, ma'am. Conventional will never end. That's true. Conventional will never end. So it's a big debate. If parodontists are there, they'll say no conventional is a must over here. Time saving for the patient. So I would. I don't want to contradict anything, but yes, there should be a question and some answers over there. Nowadays, in fact, the conventionals are immediate loading. Conventionals are coming with such a technique that can immediately place in a very short time. Just a punch, place, that's it, within 10 minutes. Apart from the time saving, anyone has any other answer? Please. Yes. Yes. Anyone else? It's the right answer. Anyone else have any other? No. See. It's a graft legs. That's correct. Because patient आपके पास आ रहा है, तो आज के डेट में वो सर्जरी नहीं चाहता, वो चाहता है कि मेरे को दांत मिले as soon as possible. Yes or no? Yes. So, how many of you are belong to prostoperi and ovus department? Please raise your hands. Almost all of you. So all of you are known for as an implantologist. Yes or no? Especially the peri department. Periodontists in the house, please. All of you are specially signed as implantologists nowadays in International Society of Periodontology and Implantology, ISPI. Now, so when you write down implantology in front of your name and the patient came to your clinic and he came with a hope that you will give them teeth. Yes or no? But when you see the OPG, when you see the CBCT, you found that the bone is very less. There is no scope of any major procedure or to place an implant. There is no alveolar bone present over there. But patient want replacement. So what he should do? Either he should lose his hope or you have to try hard. So what you want? He has to lose hope or you want to do something to give him teeth? You want to leave. That's why in a bucket list you should have everything in your bucket list. You should have a conventional implant,
you should have a cortical implant, you should have a flapless zygomatic implant, you should have a flapless pterygoid or flap zygomatic and pterygoid as well. Though that is less, we would say that preferred by the patient. Doctors तो कुछ भी कर सकते हैं, but less preferred by the patient nowadays. They don't want any sinus lift. They don't want major surgical procedure. So we have to move in an era where we can move ourselves with a minimum invasive technology. That's what we are doing, or the doctors are doing in other parts of the body, whether it's a heart, whether it's a GI, whether it is any other part of the body. Then why we have a crush of open surgery? Do we have a crush of open surgery? No. If it is possible with a flapless procedure, we should go with a flapless procedure. I'm not saying that you should not do the conventional, you should not do the cortical. No, it's not like that. The point is, when a patient came to you, what exactly he want? He want a replacement, do his replacement. If there is a very less bone, we cannot say no to the patient. We should have a technique in our hand, which is a corticobasal, with which we can give him a replacement, prosthetic replacement. Or if the patient is a very feared patient, बहुत apprehended patient है, बहुत medically compromised patient, and you know that you want to do the sinus lift, it is not possible because it's a medically compromised patient. Diabetes is at what level of the HbA1c you prefer implants? Anyone? Please give an answer. You should know this. Bit louder. सॉरी मुझे बहुत सुन नहीं रहा, बहुत मजा आ रहा है, हम इनसे कम कर रहे हैं। एक जना प्लीज, कोई भी less than up to 7, I would say up to 7 you prefer, above 7 when it goes you usually prefer. But what if the patient came to your clinic with HbA1c 8, 9, 10, would you prefer that? But if you will not give him a teeth, do you think कि उसका न्यूट्रिशन, उसका बॉडी बैलेंस सब मेंटेन रहेगा? नहीं. He want teeth, you want to give teeth, but the medical compromise condition is there. So how you can overcome those medical compromise condition and you can provide him teeth, fixed teeth? That's what we are doing every day. We are treating the patient with the diabetes up to 11.5 and 12 and 12.5 on every day. We are treating the patient with a pneumatized sinus up to canine or beyond canine, that to a flapless. Without sinus lift ke we are treating the patient. We are delivering the prosthesis to the patient on a single day. If the patient came to my clinic in the morning, by the evening we provide them prosthesis with immediate extractions, with immediate implant placement, with zero flap, with no incision, no suture. We are providing, and the patient can immediately travel back to his own country wherever he is coming from. So this is the next future of your practice, because nobody has time. Nobody want to I would say कि surgery कोई नहीं चाहता है, हर कोई दांत चाहता है, लेकिन surgery prefer नहीं करते. They want a flapless. Okay, so this is the reason why you want corticobasals. This is a future, as well as you keep it as your bucket so that you serve every patient. Let's start with this. Now, what is the meaning of SX65? Let's learn at the end of this complete presentation. Change नहीं होता ना? So welcome you all from the IM Academy. Okay. IM Academy is International Implant Master Academy. Basically, we started this academy for the implants and to change a revolution in the implant. That's what we are doing here. Patented techniques, because to learn this complete corticobasals, you have to learn the two techniques, that is SX65 and FX12. These are the two patent techniques, because what happens, whenever you learn something, you should learn the proper principles of the particular technique. Even hand washing has the principles. Okay, so if you learn the proper principles, then only you can give a success rate. Anyone can say, I can place cortical, it's very easy to place into that bone, cortical bone, that's it. No, placing implant is a very simple, but make it in a success mode. It's a difficult, because if you lose the principle, you lose the implant, you lose the prosthetic, you lose the patient. And we don't want that.
Okay, FX12 is a technique which will be explained by Dr. Mohammed in your next presentation. The biggest fear of a dentist is to go beyond the maxillary sinus. Yes or no? जहां से maxillary sinus start हो जाता है, वहीं से हमारी टेंशन स्टार्ट हो जाती है. कितने जने मेरी बात से एग्री? सिर्फ 3 जने. बाकी सब maxillary sinus को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं. So what exactly happened? जब साइनस आता है तो हमारे दिमाग में आता है लिफ्ट करना है, ये करना है, इसके पीछे का इम्प्लांट साइनस में न चलना चाहिए. बट व्हाट इफ वी लर्न द टेक्निक जहां साइनस न्यूमेटाइज कितना भी है, स्टिल वी कैन गिव हिम एंकरेज, स्टिल वी कैन गिव हिम implants even beyond the sinus where the pterygoid is there and the pterygoid need not to open. बिना ओपन किए pterygoid हम डालते हैं और डालेंगे. maybe tomorrow, today आज कोई pterygoid का केस है, tomorrow we will place the pterygoid flatness. So that will be explained to you in FX12. So now you understand why CBI is corticobasal implantology. Yes or no? So before going further, next, just one question comes into my mind. Why we don't say the basal implantology, this is the right term, or it is a cortical implantology, this is the right term, or it is a corticobasal implantology, this is the right term? Anyone have any idea? Corticobasal. Why not the basal implantology is the right term? Who know the difference between a cortical and a basal? Again, I would say the periodontism. So we have alveolar bone, yes? Okay, alveolar bone till the root of a tooth is present, we have an alveolar bone. Okay, alveolar bone के नीचे पेरिबाइकल आपका रेडिसेंसी आती है. That's a host response. जब कभी इन्फेक्शन होता है, yes or no? So after the host response, the bone become like necrotized, or we will say the resorption is there. वो resorption में जो bone होता है, that is your alveolar bone. But वो बहुत लिमिट तक होता है. वो हमें 3 मिनट beyond that it don't go. Why? उसके बाद bone का mineralization बढ़ता रहता है. ठीक है? जैसे से mineralization बढ़ेगा, you are going beyond. It start converting into the basal bone. Start converting into, and beyond that basal bone, there is a hard bone जो हम perforate करते हैं particular cortical में. That hard bone which we will perforate, that is called as your cortical bone. So for an ideal placement, you need to place your implant in cortical bone. You should not leave it in a basal bone. You should not leave it in an alveolar bone. If you are using a cortical implant and leaving it into the alveolar bone, fail. If you are using a cortical implant, leaving it in your complete implants in a basal bone, failure chances are very high. If you are placing implant in your cortical bone, everything in the cortical bone, success chances are extremely high. Are you getting my point? So this is the difference. That's why I coined the term corticobasal, because some of the threads can be in basal and it is engaged with the cortical. So cortical engagement hai, and some of the threads into the basal. That is why it is a corticobasal. For every implant engaged in the cortical, that is your cortical implantology. So we are practicing cortical implantology or the corticobasal implantology, but we are not practicing basal implantology. Yes? Agree? Please. So this sometimes we got a case, such cases in our clinical practice. How many of you will try to do this replacement with a conventional implant on the second quadrant? Sinus left ऑप्शन है नहीं, बिकॉज हम लोग यहाँ पे आकर के बहुत मजबूर हो जाते हैं. पेशेंट हमारे पास आता है, मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए, एंड वी आर स्टक कि हमको क्या करें. अगर हमें करना भी है, वी हैव टू डू लॉट्स ऑफ सर्जरीज. बहुत सी चीजें हमें करनी पड़ती हैं. इतने में या तो पेशेंट एग्री नहीं करता, या उसका बजट एग्री नहीं करता, या टाइम एग्री नहीं करता, या हम एग्री नहीं करते. बिकॉज इफ यू वांट टू डू इट, वी नीड द सर्जन टीम, वी नीड द मेनी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच व्हिच बिकम डिफिकल्ट फॉर अस सम टाइम और मेनी टाइम्स. यस और नो? इसमें ब्रेकफास्ट नहीं किया गया आज? सब बिना ब्रेकफास्ट आए आज? यस सर. नो? यस? यस सर. यस. सो लोअर में भी अगर आप देखेंगे, तो लोअर में भी वी हैव अ सीवियर बोन लॉस. ओके, तो यहाँ पे भी कन्वेंशन इज अ बिग चैलेंज. इट्स नॉट पॉसिबल. अनदर केसेस, जैसे हम आगे चलेंगे, आई एम जस्ट शोइंग द सर्टेन केसेस जो कि चैलेंज हमें क्रिएट करते हैं. तो सर्टेन आर एब्सोल्यूट चैलेंज, सर्टेन केसेस आर नॉट एब्सोल्यूट challenges.
See, in such cases we have composite defects in the mandibular posterior region. upper का बहुत high है, नीचे बहुत bone नीचे है, superadaptation is already there. In this case alveolar bone barely alveolar bone है, जब आप दांत निकालेंगे तो वो भी resorption पे जाएगी. तो यहाँ पे पेशेंट हमें कहता है डालने के लिए, इम्प्लांट डालने के लिए we are stuck कि हम डालें या नहीं डालें, डालने में फेलियर बहुत ज्यादा रहेगा. Yes or no? Okay. So another case, sinus I think लगता ही बड़ा हवा में बाहरी दिख रहा है उसकी लाइनिंग. Even if we try to touch that area with the probe भी अंदर चला जाएगा. Can we even try for the implants? No, we cannot. But the patient wants replacement. Such cases पूरा का पूरा ऊपर का ब्रिज ही हिला पड़ा है, इम्प्लांट हिले पड़े, implants are all moving and shaking. Another, the sinus is pneumatized and everything is pneumatized. बहुत severe infection नीचे है, everything is there. तो मैक्सिमम केसेस में मैक्सिला में आपके पास क्या प्रॉब्लम आएगी, या तो एल्वेओलर बोन है ही नहीं, या साइनस आपके पास बहुत न्यूमेटाइज्ड है, मैंडिबल में आपके पास बहुत पेरिडोंटल इन्फेक्शन के साथ मिलता है, बोन आपकी पूरी ऑलमोस्ट खत्म जैसी रहती है, नर्व बहुत अप्रॉक्सीमेशन में रहती है. सर ने भी बताया कि मिनिमम 2 mm का हमें उससे सेफ्टी मार्जिन लेके चलना पड़ता है. हम देख रहे हैं कि बोन ही 5 mm है, 2 mm का सेफ्टी मार्जिन, तो 3 mm का इम्प्लांट विल सक्सेस? नो. Okay, so where we are stucking, हर जगह हम इसको stuck हो रहे हैं. So to overcome these things, now we came up with the technique of SX65 FX12. The 12 is FX12 is basically for the pterygoid. The detail will be explained by Dr. Herman in the next class. But SX65 means we are placing the hole. Like at the end, you will learn the complete meaning of SS65, but we treat this case with SS65 where we have placed the implant without any incision, without any cut. So I'm just showing you the results by the time technique और कैसे करा. We are moving in the further slides. So this is another जहाँ पे sinus pneumatized है. This is how. अब if you see that case, this one. How many of you believe this is in the sinus? Please raise your hand. How many of you believe it's in the sinus? Yes, everyone believes because sinus नहीं है. But it is not in the sinus. It's not hanging in the sinus. That's what you have to learn in the corticals. You have to learn how to see beyond the sinus lining. See वहाँ पे bone कहाँ पे है. This is how we have placed the pterygoids over here. यहाँ पे almost zero alveolar bone present है, alveolar bone नहीं है. We have engaged everything into the corticals. It's all cortical implant. It is not crossing the nerve. It is not cutting the nerve. It seems like inferior alveolar को हमने बिल्कुल cut कर दिया. If I saw this case with the eyes of a conventional implantology, I would say कि this is the nerve. यहाँ से यहाँ तक 4 mm या 3 mm का distance है, 2 mm का distance छोड़ना है, तो मैं 2 mm या 3 mm का implant डाल सकता हूँ. Yes sir, yes sir, I'm wrong. No. So वहाँ पे आकर के हम स्टक होते हैं कि नहीं डाल सकता. But the implant what we have placed is 17 mm. Rather 3 mm, it is 17 mm implant we have placed. So there are certain other examples. Like here, the sinus lining is here. There is no bone parietal to sinus, so we didn't touch that area. In fact, we use the lining and use the pterygoid. This is how you have to learn how to place this. Which implant is this? This one? Zygoma. How many of you believe that zygoma can be placed flapless? How many of you believe? It can be placed flapless. ये दोनों इम्प्लांट फ्लैपलेस लगे हुए हैं बिना किसी सर्जरी के within 10 to 15 minutes. So we use this zygomatic one. It's a smooth surface zygomatic implant. This is the pterygoid implant what we have used because in the certain conditions when the sinus is so much pneumatized, we have to use this. So these are the other the showcase what I have shown you कि आप किसी भी कंडीशन के अंदर अपना pterygoid और cortical implants डाल सकते हैं. You don't have any restriction. In fact, I told you the medical challenges, medical conditions कि patient diabetes है, severe diabetic है, HbA1c high है, no doubt the healing is delayed, no doubt infection chances are higher, but you are not raising any flap. When you are not raising any flap, the healing और trauma आपने बिल्कुल negligible patient को दिया हुआ है. Healing may take time, but immediately when patient start
chewing, you are not only increasing the nutrition part of the patient as well as the body part of the healing. में infection नहीं है because these are smooth surface implants, trauma नहीं दिया, that's why the healing becomes even fast in such cases as well. So to do all these cases with the cortical implants, first you have to learn about the bone. Just briefing, I'm briefing everything because every topic is a huge topic which may take 1 or 2 day class. But we are trying to finish it to give a summary so that you understand everything. So bone, everyone knows the bone, yes? Perioprosovus, everyone know about this, D1, D2, D3, D4 bone, yes, everyone know? Yes. But for the cortical implantology, you have to learn what is the difference in a cortical bone and an alveolar bone and a basal bone. Yes or no? So, the bone all around this is your what bone? Which bone is this? Cancellous bone, soft bone. So you place your conventional implant over here. Okay? But the bone around this is your cortical bone. So you have to place your implant into the cortical, you have to engage your implant into the cortical bone. If you place your cortical implant into this network, it's going to be fail. It's going to be fail. Simple reason एक बताता हूँ आपको. आप conventional implant को किस top पे load करते हैं? 35, 40 max. Yes. When we place the cortical implant, we use the top 80, 90, 100, infinity. So do you really think we can place an implant over here with the infinity top? What about the vascular supply? Pressure necrosis will happen? Yes or no? Pressure necrosis will happen, ultimately the bone going to be necrotized, it's going to be failure. Agree? Raise your hand, you are agree. Who all are agree? Yes. It's going to be failure अगर आप यहाँ डालेंगे. Whereas if you place the implant over here in the cortical part, तो वो आपका cortical part की supply resistance से रहेगी. ठीक है? So here it's not going to be. You can place even implant at a higher top. That's the reason I mentioned you don't have to use the word basal because basal में अगर आप use कर रहे हैं तो आप alveolar की just ऊपर की layer पे जा रहे हैं. You are not engaging your cortical part. Yes. So what is the difference in a lamellar and a bowen bone? Anyone? Anyone? Immature bone. When you place a conventional implant, which bone you expect to form? Woven. Woven or lamellar? Woven. Woven bone. Yes. And which type of the healing you expect? Primary or secondary? Yes. OS healing part or the bone fracture part. OS के अंदर में आता है. Yes. What kind of healing you prefer in a conventional implant when you are expecting to form a woven bone? It's a secondary. It's a secondary healing happens whenever you place a conventional implant because there is a gap in between the secondary. The blood will come, hematoma will form, soft callus will form, hard callus will form. That's the same concept what you were actually expecting in your fracture part, fracture bone. Yes or no? So this is a secondary healing. The way you expect the formation of your woven bone. That is the reason you wait for the 2.5 to 3 months because the woven bone is a soft bone. It cannot bear the loading pressure. Yes? Lekin, when we are placing cortical implant, we don't want the woven bone to be formed. We want the lamellar bone to be formed. We want primary healing. So that there should be a very close approximation of both the ends. So there should be a minimum gap between the implant and a bone surface. Okay? So that is the reason you drill only 2 mm or 2.5 mm but you place the implant 3.5 mm or the 4 mm. So that there should be a close approximation or a minimum gap between a implant and a bone surface, interface. It should be minimum. So there is the formation of directly
lamellar bone. But any act done by a dentist or by the patient which actually create or increase the gap, that will ultimately lead to the formation or the healing is pattern of healing will be shifted from primary to secondary. Once the pattern is shifted from primary to secondary, which bone will form? Woven. And we know that woven bone cannot bear the load. Yes or no? When it cannot bear the load and you are challenging that you are giving immediate loading, so do you think implant will success? No. So all the acts which actually shift you from primary healing to secondary healing, that will lead to the failure. So this is the key point. If you learn this, that you don't have to shift from primary to secondary healing, so that is the success of your cortical implant. And it's a huge topic which we cannot cover here. But this is the reason of the failure as well. What is the role of the bone over here? Understood? Any doubt? Primary, secondary healing? Woman available? Okay. So this is called as a bicortical implant. Can you see? Okay, fine. Before moving, how many of you have placed the conventional implants in your practice? PGs. Okay. From where you get the initial torque? You get an initial torque at 30, 35, 40, whatever. From where you get that? Apical engagement of the implant, and to be specific, which bone? Cancerous. First cortical. That is your first cortical bone where you get an initial engagement of primary healing. That is here first cortical over here. But what is our target? It is here. This is your second cortical. We list out the second cortical, all the second corticals. So we cross the first cortical, engage the second cortical. That is why cortical implantology is also the term given by the Garbicho. That is a bicortical implantology. It's called as bicortical. That's the meaning, because we cross the first, reach the second. There is also a term which is called as a tricorticalization that we sometimes do in the nasal or the canine region. So you don't have to place this implant. This is your first cortical over here. This is your alveolar bone where the tooth root ends. This is your basal bone over here. Okay? And over here is your cortical bone. So we always incorporate the cortical bone. If you leave your implant over here, it's going to be failure. At the range of implant and the tooth root, it's going to be failure. So this is a minimum invasive technique for the severe atrophic ridges. Okay, the second thing what you have to learn or what you should understand, you understood the bone? Understood the bone? Because we are clearing every concept step by step. Okay? How many of you understood the bone? Raise your hand. बाकियों को समझ नहीं आते हैं. Okay, any doubt in the bone part? Clear? Anatomy. आप सब लोग OS के पहलू की आप बेसिक anatomy आप सभी जानते हैं. But still, I would say, whenever we place an implant, what area of the zone we should understand, because we are placing implant over here, we should understand about the nasal flow. Because we are dealing this area, we should know about the region of sinus. Because we are dealing the posterior to sinus, we should know about the sphenoid bone or the pterygoid bone. Okay? So, which part is difficult to learn or understand out of the knowledge? Anyone? Which is difficult? To understand pterygoid is difficult, to understand sinus is difficult, or the nasal flow is difficult? Pardon? Pterygoid? See, though the pterygoid will be understand that you will understand the next section, but here this is your the palate and the floor of the nasal flow, like the base of the nasal floor is by the palate only. Are you getting my point?
दैट इज योर पैलेट। तो ये पूरा एरिया, अगर पैलेट पूरा यहाँ तक है तो दैट मीन्स नेजल फ्लोर भी आपका आगे से पीछे तक है। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ठीक है। कभी कभी सोचते हैं कि नेजल फ्लोर का मतलब सिर्फ यहाँ पे है, नो, इट इज एंटेरो पोस्टीरियरली, ओके। So this is from anterior to posterior. Complete nasal floor is there. This part is your nasal spine. Okay, posteriorly this is your pterygoids. Okay, this is your fusion zone. So clear? Basic anatomy, basic things that you know about the maxilla. This is about the basal nasal floor. जैसे जैसे आप आगे से पीछे जाएंगे आपका nasal floor क्या होगा? थिन होता जाएगा। जब nasal floor thin होगा, that is why we need a strong anchorage, we need a strong area to engage the implant. So इसीलिए हम इसके पीछे कहाँ जाते हैं? This is your pterygoid. This is your pterygoid. The more the number of implant you have engaged into the cortical, the more the success you have, and the more number of implant you have placed into the alveolar bone, it's gonna to be failure. That's a basic difference. So anteriorly we have a more nasal floor area, or the more cortical bone. Posteriorly we have thin cortical bone. Okay, as we move further, nasal floor is thin slowly. So in the OPG, if you will compare, can you see this white line? Can you see this white line? This is your nasal floor. You should check your OPGs when you are doing even the IOP, when you are placing the implant, that it is touching or dipping or crossing the nasal floor. If your implant is below this, अगर यहीं पे खत्म हो रहा है, that means you are in a wrong way. आपका implant basal में रह गया, वो success नहीं होने वाला है. Is it clear? So you have to cross this. That is for sure. This is your sinus lining, all of you know, and yeah, this is your pterygoid, but you have to like understand. यहाँ पे pterygoid है, so this is कैसे engage करना है, वो next lecture Dr. Mohan will explain. Okay, so when we are going to place the implant, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए होगा अब मुझे डालना है, cortical डालना है, तो कहाँ डालना? Anyone have any idea? No. So we divided into basically 3 parts. एक part जो आपका sinus lining start हो रही है, इस part से anterior wall of the sinus lining to anterior wall of sinus lining, this part we consider it as A part. Okay, sorted? Anterior wall of sinus to anterior wall of sinus, that part is called will be, कल आपको सबको करना है, कौन-कौन है कल के वर्कशॉप में या लेक्चर में, उसमें प्रैक्टिकल में, so all of you, आज जो मैं बता रहा हूँ कल मैं आपसे पूछने वाला हूँ, why you are doing the case, okay? Because इसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग FMR इसी के अकॉर्डिंग ही सेगमेंटल करने वाले हैं, and you guys are going to place the implant into the patient. When you are going to place the implant, you should understand what reason I am talking about. So this is your part A. This is your part A. Anterior wall of sinus, anterior wall of sinus lining. Second part is your sinus lining, and third part is your pterygoid. जब anterior part A part जो है, now we denote it A part में this is your sinus floor. So we are going to place our implant into the nasal. We are going to place the implant into the nasal floor, into the A region. तो आपको OPG में sinus lining देखनी है दोनों का anterior wall, और उसके बीच का जो एरिया है वहां पे किसको engage करना है? Nasal floor. किसको engage करना है? और nasal floor मैंने आपको OPG में बता दिया कैसा दिखता है, उसको क्रॉस करना है, डिप करना है, क्रॉस करना है, जैसे आप रूट किनारे में डिप लेते हो ना, like the same way you have to dip into the nasal floor and you have to cross it, लेकिन क्रॉस करते तुरंत बाहर आ जाना, अंदर ही मत चलते रहना, अदरवाइज फिर क्या करोगे? म्यूकोसा को उड़ाते रहोगे और ब्लीडिंग आती रहेगी नाक से, ठीक है? एंड कितनों को डर लगता है कि नाक से ब्लीड आ गया तो इट्स बिग डील, बहुतों को लगता है, जिनको नहीं पता, बट एक्चुअली जब आप कॉर्टिकल्स करते हो समटाइम नेजल ब्लीड्स बिकॉज़ द म्यूकोसा इज देयर, इट बिकम हिट समटाइम, इट हिट होती है तो वो नेजल से ब्लीड आ रहा है, इट्स नॉट अ बिग डील. जैसे आपका एपिसेक्सिस होता है, ट्रीट इट लाइक दैट, इट विल सॉर्ट इट आउट. ओके, बी पार्ट इज द साइनस पार्ट. साइनस पार्ट के अंदर देयर आर वेरियस टेक्निक्स, and for the techniques the patent is being filed, so what it is there, so we'll explain you all the techniques what we are the patented technique, but here I'll explain you कि साइनस अगर आपका रीजन है तो आपने कैसे डील करना है. इनफैक्ट डॉक्टर हमन विल कवर सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ दैट. थर्ड पार्ट इज योर pterygoid. pterygoid डॉक्टर हमन ऑलरेडी कवर कर रही है कि कैसे डालना है. तो यहाँ पे हम नेजल फ्लोर पर डालेंगे. साइनस का जो रीजन है तो साइनस के रीजन में हम लोग नेजल फ्लोर साइनस के रीजन में भी है,
तो वहां पे भी हम नेजल फ्लोर में जाना चाहेंगे। अगर साइनस फ्लोर को नेजल फ्लोर को एंगेज नहीं कर सकते हम, तो हम आरडी रेजिडुअल बोन जो होती है, जैसे आप कन्वेंशनल इम्प्लांट डालते हैं वैसे उस बोन को यूज करके भी इम्प्लांट डालते हैं कॉर्टिकल में भी। ओके, सो बी पार्ट इज अ बिग टेक्निकल पार्ट जहां पे बहुत से तरीके हैं अलग अलग कंडीशन के हिसाब से मैनेज करने के। लोअर पार्ट को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ए इज द इंटरफोरामिना, मेंटल फोरामिना से मेंटल फोरामिना के बीच का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड एज इंटरफोरामिना। वहां पे हम लोग इम्प्लांट्स डालेंगे। एंड टुमारो वी हैव अ केस, सॉरी टुडे इन फैक्ट टुडे वी हैव अ केस जहां पे ए रीजन ऑफ लोअर एंड ए रीजन ऑफ अपर हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, ए रीजन ऑफ अपर जहां पे भी हम करेंगे वहां पे आपको किसको परफोरेट करना है, किसको परफोरेट करना है, नेजल फ्लोर। नेजल फ्लोर कन्वेंशनल में आप परफोरेट नहीं करते हो, बट इन द कॉर्टिकल यू विल परफोरेट। क्लियर? ऐसे ही लोअर के अंदर हमें परफोरेट नहीं करना है, लोअर में परफोरेट नहीं करना है। लोअर में मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव अ D1 समटाइम D2 बोन, रियली D3 भी मिल जाती, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है तो। लेकिन यहां पे मैक्सिमम जहां तक टूथ की रूट होती है उसके बियॉन्ड इज अ वेरी हाई डेंस बोन, D1 और D2, you can engage the implant over there, so that is why we don't perforate. But in certain cases in the lower, yes, कभी भी बोन ऐसे में मिल जाते हैं कि लोअर की बोन भी बहुत ही पुअर रिजॉल्व है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, D3 टाइप बोन आ रही है। एट दैट कंडीशन हम लोग लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल परफोरेट करके भी एंगेज करते हैं। We do that, but not in routine cases. Out of 10 cases, almost 8 cases we deal it like normally, and 2 cases we perforate the lower mandible as well, जहाँ पे हम engage करते हैं। Clear? But आप लोगों के cases ऐसा नहीं है। In your cases, you have to engage into the lower mandible without perforation. Yes? तो आज जितने भी जने करने वाले हैं वो परफोरेट नहीं करेंगे अपर लोअर को, अपर को परफोरेट करेंगे, you will perforate the bone. So cortical bone in maxilla we talk about. Posterior to sinus अगर हम जाएंगे तो हम किस में डालेंगे, posterior to sinus किस में डालेंगे, pterygoid में। Sinus region में we have various techniques, palatal to bone, palatal bone to nasal floor, sinus wall के engage कर देते हैं, sinus septa से भी engage कर देते हैं, trans sinus से भी जाते हैं। So these are the various techniques. Every technique is a separate huge class. So this is a bit difficult to explain every technique over here. The sinus region. Anterior to sinus, I already mentioned, we can cover the nasal floor and some pillar. Canine pillar को हम engage कर लेते हैं anterior region. Canine जो extract करते हैं canine के रूट से big palatal जाके we can canine pillars. Are you getting my point or not? Everyone? अगर you can ask me again if you don't understand that, because this is all practical. This is all what we are going to do today and tomorrow. Yes, anyone any doubt? Still here? Okay. So this is A, B, C, the zone we have decided. So the anterior region in the maxilla, what the area will cover? Will cover the nasal floor, clear? Will cover the nasal spine, canine pillar, okay? And the nasal floor is from anterior to posterior, clear? So the A region will cover all these three: nasal floor, nasal spine, canine pillars, clear? And then the canine sinus region, we can use this bone or we can use the bone palatal to the sinus. We use the bone which is palatal, not in the sinus. Posterior region, in the posterior region of the mandible, maxilla, we can use the palatal root. जो आप 6 निकालते हैं उसी 6 की रूट अगर वो नेजल फ्लोर तक जा रही है तो हम उसी रूट को फॉलो करते हुए हम कहाँ पहुंच सकते हैं, नेजल फ्लोर तक, नेजल फ्लोर तक। लेकिन अगर वो रूट साइनस में जा रही है तो तब भी इसको फॉलो करेंगे नहीं।
तब हम उसको निकाल के सिर्फ उस रूट को फॉलो कर सकते हैं, रूट के अंदर रह सकते हैं। वी कैन नॉट गो बियॉन्ड द रूट, वी कैन नॉट गो बियॉन्ड द रूट। ओके, साइनस फ्लोर को हम एंगेज कर सकते हैं। साइनस फ्लोर की लाइनिंग भी कॉर्टिकल लाइनिंग होती है। साइनस फ्लोर लाइनिंग इज आल्सो कॉर्टिकल लाइनिंग। It becomes thin and thin with age, sinus pneumatization जब होता है, but it is a cortical lining we can also use. In the posterior region we can use pterygoid or we can even laser double pterygoid. That is posterior to sinus. तो हम जब कल फुल माउथ करेंगे तो उस फुल माउथ केस में हम लोग सिंगल या डबल pterygoid करने वाले हैं. In the region of C, in the region of C, A region में हम लोग nasal floor perforate करने वाले हैं. If the condition permits, मतलब कंडीशन ऐसी है कि लेजर स्पाइन एंगेज करना है तो हम लेजर स्पाइन एंगेज करेंगे. ठीक है, अगर anyone if you want to engage the canine pillar, we will also engage the canine pillar. Okay, साइनस रीजन के अंदर हम लोग see, can you see this sinus lining? This sinus lining is there? Yes or no? थोड़ा सा I am not hearing anything. मतलब मुझे पीछे सुनाई नहीं देता, थोड़ा सा जोर से प्लीज लाउड. Sinus line is visible है? Yes, sir. Yes. So this is your nasal floor, yes or no? Yes, sir. So आप इन दोनों के बीच में ये बोन देख रहे हो? This bone. Okay. So we always find out this bone in the region of 6, in the region of 5. कि अगर ये बोन हमारे पास प्रेजेंट है, तो साइनस कितना भी न्यूमेटाइज्ड है, अगर ये बोन हमारे पास प्रेजेंट है, तो हम इस बोन का यूज करते हुए नेजल फ्लोर तक पहुंच जाते हैं. Is it clear? तो वो जो इम्प्लांट जो मैंने पूछा था साइनस में गया है नहीं, वो एक्चुअली इस बोन का यूज होके यहाँ दिख रहा था. लेकिन जब आप ओबीजी में देखेंगे ऐसा लगेगा साइनस में गया हो. दैट इज द बोन पैलेटल टू द साइनस. फ्रॉम बोन पैलेटल टू द साइनस उसी इम्प्लांट को हम नेजल फ्लोर तक एंगेज कर देते हैं. ठीक है, अगर नेजल फ्लोर तक नहीं जा पाता तो हम इसको यहीं भी छोड़ देते हैं इसके साथ एंगेज करके. और अगर साइनस एक्सटेंड है तो हम साइनस को क्रॉस करते हुए भी नेजल फ्लोर में एंगेज कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस साइनस. Is it clear? कुछ समझ में आया? कुछ पहले पढ़ा? Pterygoid will be well in the next section. Mandible में बात, mandible posterior पीछे का है, वहां पे हम lingual cortical होती है, that is your mylohyoid ridge, which is your mylohyoid ridge. Okay, upper side में जो cortical bone है, that is your external oblique ridge. Yes, good on, सही था. That is your external oblique ridge. तो जब हम external oblique ridge को engage करते हैं, that is called as buccal cortex, buccal cortical implant. और जब हम mylohyoid को engage करते हैं, that is called as lingual cortical or the lingual cortex में engage करते हैं. So posterior to mental foramen, we are engaging buccal cortical or lingual cortical, but we have to keep everything in our mind for complication and the precautions are also a thorough class. Lingual cortical जब आप चलते हो तो submandibular gland का आपको ध्यान रखना पड़ता है. ठीक है, lingual nerve तो इतना भी नहीं जाते उस तरफ, लेकिन केस inferior alveolar nerve का आपको ध्यान रखना पड़ता है. buccal cortical जाएंगे, inferior alveolar nerve हो गई, facial artery हो गई, सब स्ट्रक्चर्स वहां पे होती हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है. ठीक है, but this is a regular practice that we place lingual and the buccal cortical. Clear? So posterior to mental foramen, we are using these two techniques, buccal and lingual cortical, and tomorrow in a full mouth we are going to do both of these, buccal as well as lingual cortical. Okay. Anterior to foramen, which is called as the interforaminal region, which is the anterior region, वहां पे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. ए रीजन के अंदर आपको परफोरेट यूजुअली नहीं करना है, बिल्कुल सेंटर ऑफ द रिज में रहना है, और सेंटर ऑफ द रिज में जाके क्लोज टू द लोअर बॉर्डर और बिट अबव टू द, जहां पे आपको डेंसिटी कैसे मिलती है उस पर डिपेंड करता है आप कितना डीप जाते हैं. बट दिस इज फॉर श्योर, इतना डीप आप जाएंगे जहां पे आपके दांत की रूट खत्म होती है, उससे 4 to 5 mm आप बियॉन्ड जाएंगे. आर यू क्लियर? तो जहां पे फॉर एग्जांपल टूथ की रूट 10 mm की थी, ठीक है, इमीडिएट एक्सट्रैक्शन किया तो मिनिमम 15 mm तो आप बियॉन्ड जाएंगे. तो वहां पे आपको बहुत अच्छी हार्ड बोन मिल जाएगी. तो गेट अ वेरी गुड. ठीक है, और श्योर होना है तो सीधी करके आप उसमें चेक कर सकते हो कि वेयर एग्जैक्टली द गुड कॉर्टिकल बोन रादर देन अ कैंसरस. इफ इट इज अ कैंसरस बोन, इवन अपवर्ड नीचे जाएगी. इज इट क्लियर? मैंडिबुलर एंड मैक्सिलर, दीस आर द लोकेशन व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो किन्हीं लोकेशन पे हम लोग कल काम करने वाले हैं. क्लियर? सो
एंडिबल इंटीरियर्स के अंदर वर्टिकल प्लेसमेंट भी हम कर सकते हैं इम्प्लांट की, लाइक दिस इंगुलेटेड, मतलब कैनाइन को अगर हम बाईपास करके भी यहाँ लगा सकते हैं. दिस इज आल्सो वे वी कैन डू इट. एक्सपोर्ट एज ए कैनाइन बाईपास. ओके, इम्प्लांट अप टू द बेस, यहाँ तक भी डाल सकते हैं जो मैंने आपको बताया, व्हिच वी डोंट डू इन एवरी केस, बट इन सर्टेन कंडीशंस वी डू दैट. मैंडिबल में मेंटल फोरामन रीजन. देखो मेंटल फोरामन को ट्रीट करने का या इसको डील करने के दो तरीके हैं. नंबर एक तरीका तो ये है कि मेंटल फोरामन के आगे इम्प्लांट डाल दो, पीछे डाल दो, इसको छोड़ दो. पीछे हमने बकल कॉर्टेक्स, लिम्बल कॉर्टेक्स डाल दिया, आगे हमने क्या डाल दिया, स्टेट इम्प्लांट डाल दी, व्हील डाल दिया. ठीक है, बट हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि एक इम्प्लांट इतना दूर खड़ा है, एक इम्प्लांट इतना दूर खड़ा है, बीच का जो इंटर इम्प्लांट डिस्टेंस है दैट इज सो रॉन्ग. अगर ऐसी कंडीशन आपके पास है तो आप क्या करेंगे, इस रीजन में एक वाइड बॉडी इम्प्लांट आता है. यू कैन इवन प्लेस दैट वाइड बॉडी इम्प्लांट हियर टू जस्ट टू कंपनसेट द डिस्टेंस. कि आप अगर लंबी तार होगी तो लटक नहीं जाएगी, झूल जाती है ना, तो हमें झुलाना नहीं है. तो हम एक वाइड बॉडी बीच में डालेंगे व्हिच आल्सो हैव अ सर्टेन प्रिंसिपल्स, कैसे किस कंडीशन में डालनी होती है. तो वहां पे वाइड बॉडी डाल के आप पूरा का पूरा सेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं. दैट इज वन वे ऑफ डीलिंग मेंटल फोरामन. अनदर वे टू डील विद द मेंटल फोरामन, जो लास्ट स्लाइड मैंने आपको दिखाया, यू कैन स्टार्ट अबव द मेंटल फोरामन and you can cross the mental foramen in a tilted way which is called as a canine bypass. You can do the canine bypass. Okay, so posterior reason I have already mentioned, you can go with the lingual cortical, buccal cortical, wide body, you can place them. So these are the certain examples. Now आपको समझ में आएगा कि मैंने mental foramen के आगे 3 इम्प्लांट डाले, that is in the zone A. Now you have to give your feedback. 3 इम्प्लांट कौन से रीजन में, 3 इम्प्लांट कौन से रीजन में, फास्ट, थोड़ा लाउड एंड थोड़ा फास्ट. यस, जोन ए. ओके, इज देयर एनी इम्प्लांट इन जोन बी? नो. इज देयर एनी canine bypass? नो. एंड पोस्टीरियर टू फोरामन देयर इज लिंगुअल कॉर्टेक्स. माइलोहेड के नीचे हमने एंगेज किए, इसलिए एडवांटेज दिख रहे हैं आपको. क्लियर? वी हैव प्लेस्ड 2 implant, minimum 2 implant posterior to foramen, minimum 2 implant posterior to foramen, and minimum 2 implant interior to foramen. Okay, and बीच का एक इम्प्लांट जो हमारा है, या तो वो फोरामेन के आगे भी हो सकता है, फोरामेन पे भी हो सकता है, फोरामेन के पीछे भी हो सकता है. इज इट क्लियर? तो हम मिनिमम कितने इम्प्लांट डालने वाले हैं लोअर के एक सेगमेंट में? कितने बताए? 2 आगे 2 पीछे, एक बीच में, कितने हुए? 5. क्लियर? अपर में हमने साइनस के आगे मिनिमम 4 इम्प्लांट डाले. साइनस के आगे मिनिमम, साइनस के पीछे, मतलब साइनस के पीछे मिनिमम I'm talking about minimum 1 implant pterygoid. At the region of sinus, there could be any implant or not. ठीक है? So what is the scenario for the upper? कि अगर anterior के 4 implant fix हैं, yes or no? Yes. उसके बाद हमें 2 इम्प्लांट डालने हैं मिनिमम. ठीक है, उन 2 इम्प्लांट में या तो वो दोनों इम्प्लांट पीछे टेरिगोइड में हो सकते हैं, या फिर एक इम्प्लांट टेरिगोइड में और एक साइनस रीजन में हो सकता है. ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में एक क्वाड्रेंट में कितने इम्प्लांट हुए? कितने हुए? 6. Now you getting some, what is the name of the technique? SX65. ओके, तो कुछ फिगर क्लियर होना स्टार्ट हुए, आगे के और फिगर्स क्लियर होंगे. तो हम जब फुल मॉक करेंगे, हम एक क्वाड्रेंट में 6 इम्प्लांट्स डालने वाले हैं मैक्सिला के, और एक क्वाड्रेंट में मिनिमम 5 इम्प्लांट डालने वाले हैं मैंडिबल में. इज इट क्लियर? ओके, ज्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन नॉट इन एवरी कंडीशन, नॉट इन एवरी केस, बिकॉज हमें रीमॉडलिंग भी ध्यान में रखनी है. ओके, बोनस ऑप्शन का भी ध्यान रखना है. सो व्हाट इज दिस? So we are using smooth surface single piece cross arch stabilization implants with a 6 implant in a 1 quadrant of maxilla and a 5 implant in a 1 quadrant of mandible. That is called SX65. Are you getting my point? We are not using a 2 piece. We are not using a rough surface. We are completely using smooth surface. We are doing 6 implant, placing 6 implant in 1 segment of the maxilla and a 5 implant in 1 segment of mandible. But what is left in between these 2 points here, 2 points here, that is called as the cross arch stabilization.
stabilization. Is this left over here? Yes or no? ओके, आपने एक बिल्डिंग बनती हुई देखी, कोई भी बिल्डिंग बनती है, सबसे नीचे क्या फाउंडेशन, द फर्स्ट इज फाउंडेशन। फाउंडेशन पिलर्स खड़े करते हैं जो होता है, उन पिलर्स को आपस में कैसे आप टाइट करते हैं, आप कैसे ज्वाइन करते हैं, एनीवन व्हाट इज दैट कॉल्ड एज बीम। अगर बीम नहीं करे तो क्या पिलर लॉन्ग टर्म नहीं करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप हमने फाउंडेशन बनाया, सेकंड स्टेप उन सब फाउंडेशन के पिलर्स को आपस में ज्वाइन किया विद हेल्प ऑफ बीम। उसके ऊपर फिर हमने अपना घर बनाया, स्टैटिक्स बनाया। यस और नो? थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट इज योर मेंटेनेंस, आपने घर पूरा मेंटेन करना। तो दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। द फर्स्ट पार्ट में हमने अपना मटेरियल चूज किया, स्मूथ सरफेस सिंगल पीस, स्मूथ सरफेस सिंगल पीस, हमने अपना मटेरियल चूज किया। देन सेकंड पार्ट व्हाट वी डिड, we place the implants in a proper location with a proper number. If your numbers are missing, numbers are less, your technique is failed. If your bone is like mismanaged the bone, अगर आपने जिस bone में डालना था वहां नहीं डाला, जिस location में डालना था वहां नहीं डाला, you're gonna be fail again. Number matters, location matters, bone matters. Okay? चौथी चीज जो मैटर कर रही है वो ये कि आपने उसको प्राइमरी हीलिंग वाले कॉन्सेप्ट्स पे ही रखा है, डिडंट शिफ्ट इट टू द सेकेंडरी हीलिंग। वो कॉन्सेप्ट्स क्या है देख लो, और यहां कवर अप नहीं कर सकते। सो व्हाट द लेफ्ट इज नाउ बीम, व्हाट इज लेफ्ट इज नाउ, क्योंकि प्रोस्थेटिक पार्ट कल कवर करेंगे, अभी हमने स्ट्रक्चर के बाद में बीम देना है। तो दैट बीम इज कॉल्ड एज क्रॉस आर्च स्टेबलाइजेशन। यस और नो? All the implantologists are already doing the implants with a conventional. What exactly they do after placing implants? उसके ऊपर क्या देते हैं? क्या देते हैं प्रोस्थेटिक बनाते हैं? जब पहले चीज मेटल का बार फ्रेमवर्क बनाते हैं, and that framework actually hold all the implants together. Yes or no? Hold all the implants together. वो उसको stabilize भी करता है, मूवमेंट से बचाता है फोर्सेस के लिए। ठीक है? So actually from here to here, midline of cross arch, you are actually maintaining the cross arch stabilization. So that is basically what we are doing is a rigid splinting. We are splinting all the implants together. Okay, not with the fiber splint, definitely. So we are doing with the splinting, either with a titanium framework or SS framework, whatever you are using. So that is a part of rigid splinting. अब वो rigid splinting करने के दो तरीके हैं। एक तरीका जो हम सब रेगुलर में यूज कर रहे हैं, which is your framework, जो आपका लैब टेक्नीशियन बनाता है, चाहे DMLS से बनवाया जैसे बनवाया। What is the another way is to do the sim crystallization, or in a simpler language are doing a welding, doing a intraoral welding. With the help of intraoral welding, you can immediately connect all those implants together. You can immediately do the rigid splinting with those implants, so that they should not move. The ideal framework of two-piece implant, what you are using, it's usually 3x3 or 2x3 is the framework size what you are using in the lab. हम लोग स्टेबलाइजेशन करने के लिए आपको दो वायर दिख रही है, एक्सट्रीम दो वायर दिख रही है। The one wire diameter is 1.5 to 2 mm. Okay, so if you are using a 1.5 mm diameter to do those implants, so 1.5 plus 1.5 is, so you make the framework immediately in your clinical patient, immediately in your chair. तो आपने सारा framework immediately बनाया, सभी implants को immediately rigid splint कर दिया। Yes, understood? Can you see this? This is called a rigid splinting, जहां पे आपने सभी implants को एक साथ tie up करके उनको joint कर दिया, and this will act as a framework where the not even a single implant will move, because every implant is placed in a different directions. Okay, got my point? So this is a single piece, smooth surface, cross-arch stabilization with the 6 implants in the upper maxilla and the 5 implants in the mandible. What that make is SX65. That's a cortical implant patented technique. Okay. So for this, what the machine we use is the sim crystallizer or intraoral welder. This is what we use tomorrow, or in fact today we will use this intraoral welding
The only contraindication is your pacemaker. This is how we do that. Before that 1.5 mm वायर लगाई, उसको फिनिश किया, ट्रिमिंग करा, ठीक है. Later on you can take an impression. Okay, prosthetic part we'll cover tomorrow. So this is what we do in our SX65, smooth surface, single piece, cross stabilization with 6 maxilla, 5 mandible. So this is the meaning of SX65 with the locations, with the cortical implants, with all the basic things. Understood? Any query? ये सब हम आज करने वाले हैं, ठीक है. तो अभी आपको समझ में आया तो शाम को कॉन्फिडेंटली करेंगे. How many of you are confident that you can do it in the evening? Only 2 people, 5 people, not rest of the people? Yes, rest of the people. Any query? Any questions? Doubt? Clear? So we are going to do it today evening and tomorrow morning. Thank you so much for the 665 and for patience fully listening. Thank you.